नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। तो E20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के बीच केंद्र सरकार थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय और इंडस्ट्री एक्सपर्ट एथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़े माइलेज, इंजन की क्षमता और वाहन प्रदर्शन पर उठ रहे सवालों का जवाब देंगे। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि E20 पेट्रोल से माइलेज में मामूली सी कमी आ सकती है, लेकिन वाहन की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। तो ये बड़ा बयान हरदीप सिंह पुरी की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है सरकार को लेकर, क्योंकि E20 पर थोड़ी ही देर में सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। एक्सपर्ट्स के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है सरकार की। एथेनॉल से माइलेज कम हो रही है, झूठ है या सच है, दावे में कितना दम है, इसको लेकर ये जो बैठक होने वाली है तमाम बातें जो है इसमें स्पष्ट हो पाएंगी। Somebody is saying that fuel mileage is going to be dropped. It's now well established that when you have ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. What is that thing called? The knocking. That improves. Mileage, yes, it may drop a little, but it may drop a little. Mileage can drop a little because of various things. Secondly, we have reached a stage after consulting all the stakeholders. तो वहीं एथेनॉल पेट्रोल पर उठते सवाल, ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या एथेनॉल से गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है? 10 से 30% तक माइलेज कम होने की बात कितनी सच है, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। क्या एथेनॉल ईंधन से इंजन खराब हो रहा है? क्या एथेनॉल से गाड़ी की क्षमता पर इसका असर पड़ रहा है, गहरा असर पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी की क्षमता कम हो गई है? E20 पेट्रोल की टंकियों में चींटियां लग रही हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं एथेनॉल पेट्रोल पर उठ रही हैं, इस तरह की बातें जो हैं एथेनॉल पेट्रोल पर हो रही हैं और तमाम सवाल यहां पर उठते नजर आ रहे हैं। इसी बीच तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता कमलेश सिंह। कमलेश, इस पूरे मामले को लेकर बैठक हो रही है सरकार के साथ, लेकिन लोग काफी चिंतित, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं E20 एथेनॉल पेट्रोल को लेकर। जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र के जो दिग्गज लोग हैं, टेक लोग हैं, जी कमलेश, होने जा रही है। देखिए, अभी कुछ ही देर में जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र के दिग्गज लोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, उसको सरकार कोऑर्डिनेट कर रही है, जिसमें कि कई जाने माने नाम है, जिसमें कि टोयोटा के सीईओ भी हैं और उसके अलावा मारुति के भी सीईओ जो शिरकत कर रहे हैं। तो इसके अलावा प्रमोद कृष्णन, विक्रम गुलाटी, वर्तिका शुक्ला और राहुल भारती, पुनीत आनंद, आशुतोष वर्मा जैसे दिग्गज लोग हैं जो अलग अलग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं या फिर उनके ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और ये भी जानकारी देने वाले हैं कि इथेनॉल किस तरह से फुल प्रूफ है, क्योंकि सरकार इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोऑर्डिनेट कर रही है। लिहाजा इथेनॉल से जो देश भर में चिंताएं बढ़ी है, उस चिंताओं को दूर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और निश्चित रूप से जब ये सभी दिग्गज अपनी अपनी बात रखेंगे तो जो लोगों में जो भ्रम और गुस्सा है, खासकर इथेनॉल से जो गाड़ियां खराब हो रही है, उनके मशीन खराब हो रहे हैं, उन पर जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने की कोशिश होगी। और आप देख पा रहे हैं कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है और एक ऑटोमोबाइल क्षेत्र के जो 8 दिग्गज लोग हैं, जो अलग अलग क्षेत्र के ऑटोमोबाइल क्षेत्र के दिग्गज हैं, वो मंच पर बैठ चुके हैं। कुछ ही देर में उनकी ओर से ये ब्रीफिंग शुरू होगी और निश्चित रूप से क्योंकि ये लोग अलग अलग ऑटोमोबाइल क्षेत्र के हैं, जिसमें दिक्कत का भी माने जाते हैं, मारुति के भी हैं, हुंडई के भी लोग हैं। निश्चित रूप से उनकी ओर से सफाई आएगी तो लोगों के बीच जो भ्रम है और संशय का वातावरण वो खत्म होगा। बिल्कुल, देखिए अब ये भ्रम कितना है, तथ्य कितने सही हैं इसके पीछे के, ये तो देखिए इस बैठक के बाद भी स्पष्ट होगा, क्योंकि लोगों की एक अलग ही राय E20 पेट्रोल को लेकर सामने आ रही है। ऐसे में जानकारी कमलेश यहाँ पर ये भी है कि इस मीटिंग में एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी इस बैठक में शामिल होंगे सरकार के साथ, वो भी इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा नहीं करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं और एक्सपर्ट बैठ चुके हैं। वो कब कुछ ही देर में आपको फ्रेम मिल रहा होगा। सारे एक्सपर्ट जो 7 अलग अलग दिग्गज कंपनी ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लोग हैं, वो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो स्पष्टीकरण है। बिल्कुल, तो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं कि बैठक के, मीटिंग के पूरे प्रबंध यहां पर हो चुके हैं। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी आपको बता दें, पूरे देश में खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एथेनॉल को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एथेनॉल से उनकी माइलेज काफी कम हो गई है।
तो वहीं सरकार के पक्ष की अगर यहाँ पर बात करें तो उनका ये कहना है कि E20 पेट्रोल को लेकर कुल मिलाकर ये मिथ फैलाया जा रहा है, यानी कि भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, गलत सूचनाएं दी जा रही हैं। श्री मनप्रीत सिंह बिंद्रा, श्री मनप्रीत सिंह बिंद्रा, सर्कल हेड सेल्स अर्बनाइट बिजनेस बजाज ऑटो लिमिटेड, श्री विक्रम गुलाटी, country head and executive vice president Toyota Kirloskar Motors, and Mr. Rahul Bharti, senior executive officer corporate desk Maruti Suzuki. So we'll begin with first, we will take some opening remarks by some of the experts. Hello. तो आप तस्वीरें देख सकते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, यहां पर सरकार का भी जवाब सुनने को मिलेगा। वहीं आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो एक तरह से बैठक है कुछ ही देर में बस शुरू होने वाली है। बैठक में क्या कुछ बातें होंगी वो भी आपको बताएंगे, वो भी आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तमाम जो गाड़ी हैं, उन कंपनियों के जो मालिक हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो जनता यहाँ पर त्रस्त नजर आ रही है E20 पेट्रोल को लेकर, काफी शिकायतें आ रही हैं E20 पेट्रोल को लेकर। अब ये इस पूरी बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि एक्सपर्ट्स की राय इस पर क्या होती है और सरकार उन एक्सपर्ट्स की राय को लेकर क्या जवाब देती है। क्योंकि अभी जिस तरीके से E20 पेट्रोल को लेकर सरकार की तरफ से एक फतवा जारी कर दिया गया है, फरमान जारी कर दिया गया है कि E20 पेट्रोल ही मिलेगा, तो उससे लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अगर E20 पेट्रोल है भी तो उसको ऑप्शनल रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कई लोगों को अपनी गाड़ियों में समस्याएं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा भी जो है वो 7वें आसमान पर देखा जा रहा है। तो वहीं सरकार जो है सभी समस्याओं से बिल्कुल दरकिनार करते नजर आ रही है। वो इन तमाम समस्याओं को, इन तमाम जो जानकारी सामने आ रही है उपभोक्ताओं के द्वारा, या फिर यूं कहें कि जो तमाम गाड़ियों के Now I'm inviting Ms. Vartika Shukla for her opening remarks. Thank you, madam. Very good afternoon to everyone. This discussion and the interaction is on the E20 Ethanol Blended Petrol program. This ethanol blending in petrol has been not done overnight. It is a measured, scientifically driven, step-by-step process. In 2013 and 14, we were blending about 1.5% ethanol in gasoline. And this program was targeted to have 20% blending, which is E20, which was completed in December 25, 5 years ahead of the target. This program, the ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence, extensive testing by the automotive manufacturers and the agencies who support them, namely the Automotive Research Association of India, ARAI, and SIAM. And also it is in line with the global best practices which is followed to green the fossil fuels to lower the carbon emissions. There have been diversification in the sources to produce this ethanol, which has led to the reduction of crude import. And if you have seen the West Asia crisis, which we overcame, some part of the vulnerability was reduced by reduction of crude import equivalent to the 20% gasoline, which was made available to all the customers across the country. So with this also, you may note that
there are some pointers which have been released by the Ministry of Petroleum and Natural Gas, which concern the use of water in the production of ethanol, as also the value of production of ethanol, which goes into blending, plus the capacity of ethanol production in the country. There are several countries across the globe, Canada, US, Brazil, Paraguay, Germany, who have used ethanol in various blends for several years. It is pertinent to note that since E20 ethanol has 80% of gasoline, which is fossil fuel, the main characteristic of the fuel is still fossil based, which is gasoline. The specifications are well structured in terms of its compliance to BIS standard IS 17021, published in 2018. Again, these standards are a result of a dialogue between various scientific agencies, experts, and extensive testing. And all ethanol-based gasoline, E20 gasoline, which is spread across the country now in all retail outlets, 77,000 plus of them all across the country, have uniformly adopted the specifications, which is compliant to meeting the emission standards for BS6, as well as several other specifications which regulate the engine performance in terms of higher RON, compliant sulfur, and water content, which is compliant to meeting the requirement of engine performance. So this is a summary of the few points of the E20 program of the Government of India, which has now made us less reliant on 100% import of crude towards production of gasoline. Thank you, Vartika ji. Now I request Mr. Vikram Gulati to make some. Good afternoon. Good afternoon to all. So, just want to add to what's been said. The automotive industry is amongst few industries that is, very strongly regulated in terms of quality and performance. We have stringent norms for vehicles to meet emissions, safety, performance, etc. And like mentioned, fuel side also, there are very clear specifications. It's not only the OEMs who are producing these vehicles which test them very elaborately, but also when you introduce a vehicle, these have to be tested, certified, homologated, and then introduced. And now with newer norms, there is intermittent, again, certification by bringing some of the on-road vehicles back and testing them. So, the point I'm trying to make is these vehicles that are made available to consumers are extremely well engineered, well designed, and have a very immense element of oversight, and through very technically sound testing agencies which are independent. Now, the second point I'd like to briefly make is to set the context. Ethanol is a very good fuel. Its RON is much higher, therefore very good drivability. And it's nothing new. In fact, I was also surprised to know that initially in early 1900s, when the new automobiles started to roll out, it was ethanol that was used. And another fact is that, its performance is so good that it is used in Formula 1 racing cars. So the fuel itself. सीधे रुक कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का. Congratulating the Government of India for the steps it has taken and continues to take for India's energy independence. Over the last
few days we have seen a lot of social media chatter regarding how damaging E20 possibly could be to the vehicles. We are here to dispel these concerns. As a responsible manufacturer and the world's largest two-wheeler maker, we sell over what part did you miss? I can start again. Hello, check 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is okay? Is okay. Sir, can you just get nearby? Okay, closer, closer. Is this better? Check, check. Can you hear me? One second. Is the problem in our audio box there? It's okay now? It's not okay. So which mic? We are using this mic. So if we are using this mic, you are getting it? Hello. Check, check, check. This is okay now? This much level? आशुतोष जी आप बोलिए. Can I? Can I? Can I go ahead? Okay, okay. What happened, Amir? Okay. Check, check, check. Podium and see. Just see the podium is working. Podium is. This is working.